Good morning to everyone. Let us do with this sum in front of your screen. L, S and B were in partnership, sharing profits in the ratio half, one-fourth and one-fourth. Their balance sheet, see here it says that L is sharing a profit. L is getting half of the profit. S is getting one-fourth of the profit and B is getting one-fourth. If we can see, this is not in ratio, but it is in fraction. So our first thing will be to convert this convert this fractions into ratio. So that we will do in the later part of the lecture. The balance sheet as on 31st December 2013 was as under the date on which they decided to dissolve the firm. So on 31st December 2013, the partners decided to dissolve the firm, to dissolve their partnership and the business. So let us see in the liability side, they have given creditors, which is 15,000. Then there is income tax payable. Now creditors is an outside liability. Income tax payable is payment to government. So this is preferential liability, preferential creditors. We had discussed in the previous lecture that preferential creditors has to be paid first. So here there is income tax payable. It has to be paid first. Then we have loan from bank, 30,000. This is a secured loan, which is, this loan is secured by pledge of stock. Means stock को बेच के जो भी पैसा आएगा, that we will utilize to pay the stock, that we will utilize, that we will utilize to pay the loan. The amount which is received by sale of stock will be used to pay the loan. Loan from S is one of the partner. So loan from S is 11,000. S is given loan to the business worth for rupees 11,000. S loan is an internal liability. Then we have capital. L has contributed 40,000 to the towards the capital. S has contributed also 40,000 and B has given 30,000. Now in the asset side, the most important asset which in piecemeal distribution is cash. We have a balance of 9,000. Then stock will be utilized to repayment of bank loan. Debtor, furniture, motor car are the other assets in the piecemeal distribution. The asset is not that important because the amount what we get at the sale of asset is important, because that will be utilized to pay the liability as per the order of payment. So let us come to the first point. Bank could realize only rupees 25,000 on disposal of stock. So when the partners sold the stock, they realized 25,000 only, but the loan is of 30,000. But we could realize only 25,000. So how much amount is still unpaid? Can anyone tell me? 30,000 is the amount of loan, and with the sale of stock we could get only 25,000. That means still 30,000 minus 25,000, 5,000 is unpaid amount of loan. So now there is no stock left with us. Now we cannot repay this loan through sale of stock, because stock is already sold. जो stock था हमारे पास उसको तो हम already sell कर चुके हैं, तो हमारे पास अभी कोई भी stock नहीं left out है. तो अब ये remaining 5,000 है, ये भी outside, this remaining 5,000 amount of loan will become an unsecured loan.
क्योंकि जो सिक्योरिटी था वो ऑलरेडी सेल हो चुका है, अब हमारे पास कोई स्टॉक बचा हुआ नहीं है, सब सेल कर दिया। तो जो पेड पोर्शन है बैंक का बैंक लोन का 5,000, that will be considered as unsecured. Now 5,000 will be considered as unsecured, and this will be treated with par with creditors. मतलब हमारे पास लोन फ्रॉम बैंक है 5,000 जो कि अभी भी पे करना बाकी है, फिर वी हैव क्रेडिटर्स 15,000। अब ये दोनों एक ही लेवल के हो जाएंगे एंड हम इनको साथ में पे करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेशो। देन वी हैव लोन फ्रॉम एस which is 11,000. Loan from S is 11,000. This is internal loan. After paying all the outside liabilities, then we will pay this loan from S. Then we will pay the capital. So then what is the next point given? A sum of 3,000 was spent on furniture for getting a better price. Means हमारे पास 9,000 है, 9,000 हम क्या कर सकते थे? If this point was not there, we would have used that 9,000 to pay the liabilities. But they say that a sum of 3,000 was spent on furniture so that we can get a better price. See, sir, what we have done, maybe we wanted a higher price or furniture, so we spent rupees 3,000 maybe on its repair so that we can fetch a higher price. So ये 3,000 हमने 9,000 में से खर्च किया होगा. 9,000 cash which we had in hand from the 3,000 was used to was used to repair the furniture to get a better price on its sale. So that 3,000 सबसे पहले we will minus and remaining 6,000 we will use to pay the liabilities as per the order of payment. And then they say other assets were realized as follows. January में first realization we got 12,000, February में we got 15,000, March we got 10,000, April we got 30,000, and final realization we got of 35,000. The partners distributed the cash as and when available using excess capital method, show distribution of cash. So our first step will be, what will be our first step? Our first step will be to prepare excess capital statement. Here we require capital balances. Now, what is the capital balances given in the question? Capital balances is 40,000. 40,000 of S also and 30,000 of B. Now here in the question, is there any reserves given? Reserves is nil. We cannot see any reserves and even losses are not there. So अगर हम लॉसेस और रिजर्व्स यहाँ पे एडजस्ट करते तो वैसे भी वो नील है. तो हम लोग को जो नेट कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल जो मिलने वाला है, इट विल बी इक्वल टू द कैपिटल बैलेंसेस बिकॉज देयर इज नो रिजर्व्स. रिजर्व्स भी नहीं है, there is no reserves and there is no losses. So reserve add करेंगे nil, it will be the same amount. Losses less करेंगे nil, it will be the same amount. So I am directly writing net adjusted और net capital balance. इसमें हम क्या करेंगे? Profit sharing ratio we will have to write, but the problem here in the sum is profit sharing ratio is given in fraction. तो इसको रेशियो में लेके आना, हाफ, 1/4 and 1/4. Let us go to the working note. Let us go to the working note. Here what is given? Else ratio, else fraction is half. This is 1/4 and this is also 1/4. Now tell me which is the highest number in the denominator. Do you know what is denominator? Here for L, 1 is the numerator, L2 is the denominator. For S, 1 is the numerator, 4 is the denominator. For B also, 1 is the numerator, 4 is the denominator. Tell me the highest value of denominator क्या है? What denominator का highest value क्या है? It is 4. तो तीनों
तीनों को हम क्या करेंगे, ऑल द थ्री जो फ्रैक्शंस है, वी विल डिवाइड बाय द हाईएस्ट नंबर इन द डिनोमिनेटर. So it is 4. The highest number is 4 in the denominator. So all the three we will multiply by the denominator. So here tell me, half 1 upon 2 is half. Half into 4 हमें क्या मिलेगा आंसर? Take your calci. 4 का 1 upon 2. What answer you will get? We will get 2. And 4 का 1/4 निकालो. 4 into 1 upon 4. What you will get? You will get 1. Same way 1/4 का again 1/4 into 4. 4 का 1/4 is 1. So we got the profit sharing ratio. What is the profit sharing ratio? It is 2 is to 1 is to 1. So we got the profit sharing ratio. Now we can use here 2 is to 1 is to 1. Now what we will do? Now we will find out the unit capital. Now we will find out the unit capital, or you may say unit or base capital. We'll find out the unit or base capital. How to find out the unit or base capital? It is net capital balance divided by profit sharing ratio. So net, we will find out that for one share of profit, how much has L contributed? 40,000 divide by 2, you get 20,000. Then how much is S contributed for one share of profit? 40,000 divided by 1. S has given 40,000 for one share of profit. What about B? 30,000 divided by 1. We get 30,000. So which is, who has contributed the least for one share of profit? वन शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए सबसे कम अमाउंट एल ने दिया है. सो वी विल टेकिंग L's capital as base. Taking L's capital as base, we will calculate the proportionate capital. We'll take out the proportionate capital formula. फिर for proportionate capital is base into PSR. Base is how much? Base is 20,000. PSR is 2. So 20,000 into 2, how much you get? 20,000 into 2, we get 40,000. Same way, 20,000 is the base. SPSR is 1. So 20,000 into 1, how much you get? Then 20,000 into 1. Again, we will get 20,000. Now we will find out the interim excess. Interim excess. What is the formula for interim excess? Net capital balance minus proportionate capital. How much is the net capital balance? It is 40,000. For L, how much is the proportionate capital? It is 40,000. 40,000 minus 40,000, nil. For S, adjusted capital is 40,000. Net capital balance is 40,000. Proportionate capital is 20,000. 40,000 minus 20,000 is 20,000. Same way for B, 30,000 is the net capital balance. Proportionate capital is 20,000. We get 10,000 as the interim excess. Now again we will repeat the same steps. We will write the PSR, which is 1 is to 1. And after that, we will find out the unit or the base capital. Base or unit, say unit or base capital, which is how much, how we will we find out? Interim excess capital divide by PSR. How much are we getting? 20,000 divided by 1 is 20,000. 10,000 divided by 1 is 10,000. Now tell me which is the base. सबसे कम क्या है? 10,000. उसको बेस लेंगे. So taking whose capital? Taking B's capital as base.
as base, we will find out the proportionate capital. We will find out the proportionate capital. Proportionate capital is what? It is base into PSR. Base into PSR. So base is 10,000. PSR is 1. So this will be 10,000. Base is 10,000. PSR is, sorry, base is 10,000. PSR is 1. So this will also be 10,000. Now tell me what is the final excess. Final excess is equal to interim excess capital minus proportionate capital, which is equal to interim excess is 20,000, proportionate capital is 10,000. We get 10,000, and here interim excess is 10,000 and proportionate capital is also 10,000. 10,000 minus 10,000, we get nil. So with this, our what is done, our statement is done. Now we have to give the order of payment. Kiske column mein sub, whose column amount is there in the last line, which partner's column amount is there, that is S. So we will have to see 10,000 is there in the S column. So pay to S, pay to S rupees 10,000 will be our first statement. Second statement, go one line above, go one line above, एक line ऊपर, second last line S and B. So we will have to pay to S and B. दोनों को add करो, we get 10,000 plus 10,000, 20,000. कैसे मिला 20,000? 10,000 plus 10,000. How to pay? In their PSR, which is 1:1. Now after paying both, लास्ट लाइन भी पे कर दिया, सेकेंड लास्ट लाइन भी कंप्लीटली पे कर दिया, इसके बाद अगर फिर भी पैसा है तो पे टू ऑल करना है. ऑल मीन्स L, S and B, all the three in their PSR, in their PSR. This is, with this our what is done, with this our order of payment is done. While paying the partners, we will have to pay attention here. तो यहाँ पे what we will do now, let us count our liabilities. We have creditors, लेकिन उससे भी पहले हम इनकम टैक्स को पे करेंगे because it's preferential liability. Then we have creditors and loan from bank. 3 हो गया. लोन फ्रॉम बैंक में 5,000 पे करना बाकी है. फिर हमारे पास लोन फ्रॉम S4 हो गया. एंड 3 ऑफ द कैपिटल्स हमारे पास 7. वी आर हैविंग 7. How many liabilities we have to pay? We have to pay creditors, income tax payable, loan from bank 3, and loan from S4, and 7, 3 capitals, 3 partners capital. So total we will have to pay 7 liabilities according to order of payment. सबसे पहले इनकम टैक्स पेबल पे करेंगे because it is government liability. उसके बाद क्रेडिटर प्लस लोन फ्रॉम बैंक, दोनों को एक साथ पे करना है because both belong to the same category. फिर ये तीनों को पे करने के बाद लोन फ्रॉम एस पे करेंगे. वो भी कंप्लीटली पे होने के बाद पार्टनर्स को पे करेंगे एज पर द ऑर्डर ऑफ पेमेंट विच इज गिवन इन हियर. सो हम लोग को हमारा बिजनेस कभी खत्म हुआ है, ये Jan 2014 को, 1 Jan 2014. तो यहाँ पे आई विल राइट Jan 2014 because business कभी wind up हुआ 31st December 2013. The business was dissolved. तो वो टाइम पे what all balances are there. See यहाँ पे मैंने क्या किया, 7 liability, income tax, creditors, loan from bank, loan from SN capital. उसके अलावा 4 column extra prepare करना है. In every sum we will have to count the liabilities plus
4 कॉलम एक्स्ट्रा वी विल हैव टू मेक. क्या करना है, हमें लाइबिलिटीज को काउंट करना है, उतना कॉलम बनाना है एंड साथ में 4 कॉलम्स एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है इन ईच एंड एवरी सम. तो व्हाट इज दैट 4 कॉलम एक्स्ट्रा? डेट, पर्टिकुलर्स, कैश अवेलेबल एंड टोटल क्लेम्स. अब ये क्या है, पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे बैलेंस बॉट फॉरवर्ड. कैश अवेलेबल कितना है क्वेश्चन में, हाउ मच कैश वी आर हैविंग अवेलेबल, दैट वी विल सी इन द असेट साइड. वी हैव 9000 का कैश बैलेंस, कैश इन हैंड यहाँ पे लिखना है 9000. देन टोटल क्लेम्स क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम सब लाइबिलिटीज लिख लेते हैं. इनकम टैक्स पेबल इज 4000, क्रेडिटर्स इज 15000. सो हियर वी विल राइट income tax payable is 4000, creditor is 15000, loan from bank 30000 minus 25000. How much is still unpaid? 25000 we paid through sale of stock. स्टॉक को सेल किया, 25000 मिला, लोन 30000 का था, 25000 पेड ऑफ हो गया. अभी भी अनसिक्योर्ड लोन कितना हो जाएगा? 5000, बिकॉज सिक्योरिटी व्हाट वाज अवेलेबल इज सोल्ड आउट. Now we have to consider creditor and loan from bank at par. दोनों को एक ही कैटेगरी में ट्रीट करके साथ में पैसा देना है. लोन फ्रॉम एस इज 11000. एस ने कितना लोन दिया? 11000. So we will write as loan from S is 11,000. And what is the capital balances? Check in the capital balance where we will check adjusted capital balance. क्योंकि यहाँ पे कोई रिजर्व नहीं है तो adjusted capital balance और capital balance दोनों सेम है. 40,000, 40,000 and 30,000. तो यहाँ पे I will write it is how much? 40,000, 40,000 and 30,000. Now what is total claims? टोटल क्लेम्स इज नथिंग बट हमारा टोटल लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग, टोटल लाइबिलिटी टू बी पेड. सो कितना पे करना है लाइबिलिटी? 4000 है, देन 15000 है, देन 5000, एड ऑल ऑफ देम, देन 11000 है, देन वी हैव 40,000, 40,000 and 30,000. We are getting, add all of them, are you getting 1,45,000? So total जब business dissolve हो गया, dissolution हो गया, बंद हो गया, तो total we have to pay to the liabilities amounting to 1,45,000. तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हम 9000 से लाइबिलिटी पे कर सकते थे, बट यहाँ पे दे हैव टोल्ड कि हम लोग ने क्या किया, लाइबिलिटी पे करने से पहले फर्नीचर को बेटर प्राइस मिलने के लिए 3000 खर्चा किया. तो व्हाट वी विल डू हियर, व्हाट वी विल डू, लेस पेड, less repair of furniture, repair of furniture. फर्नीचर को रिपेयर करते वक्त we spent 3,000 rupees. So how much is the cash now available with us with which we can pay our liability? How much cash is available? 9,000 में 3,000 we spent on repairs, so we are having 6,000 rupees available with us. तो ये 6,000 में से हम क्या करेंगे? टेल मी. सबसे पहले हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करना है. सबसे पहले वी विल हैव टू पे आवर इनकम टैक्स पेएबल. 6,000 है हमारे पास, क्या उसमें से 4,000 पे कर सकते हैं? लेस इनकम टैक्स paid, income tax paid, how much we will be paying? 4,000. So हमारा liability भी 4,000 कम हो जाएगा. हम total liability was 1,45,000. Now we are paying income tax. So 4,000 income tax कम हो गया तो liability also 4,000 से कम हो गया. Now how much cash is available? 6,000 में से 4,000 पे किया. Now cash available is 2,000.
and now we will have to pay creditors and bank loan, दोनों को एक साथ पे करना है. टेल मी ये 2000 जो हमारे पास है, ये इसमें से क्या पे करे, क्रेडिटर्स को पे करे या बैंक लोन को पे करे. वी आर हैविंग कैश अवेलेबल 2000, so from this 2000 we cannot pay creditors और बैंक लोन फ्रॉम बैंक, हमें दोनों को ही पे करना पड़ेगा. तो उसके लिए वी विल हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एक्सपेंस. 15,000 एंड 5,000 का रेशियो निकालना पड़ेगा. सो वी विल गो हियर. क्रेडिटर्स is how much? It is 15,000. Bank loan is how much? Bank loan is 5,000. What will be the ratio? 15,000 में 30 दोनों गया, तो here what will remain? 15 and 5. जिसको और छोटा करना है तो वो भी कर सकते हैं. 5 3s are 15 and 5 1s are 5. So 15 is to 5 also we can write, or if you want to further reduce it, it will come to 3 is to 1. So what we will do, this 2000 we will use less paid to creditor and bank loan in ratio 3:1. So 2000 हम पे करेंगे, we will pay 2000. So our liability also will reduce, total claims also will become less. But 2000 को ये रेशियो में डिवाइड करना है. So divide 2000 in the ratio, divide 2000 in 3:1. 3:1 में डिवाइड करो. How much you will get? 2000 into 3 plus 1 is 4. 2000 into 1 divided by 4. How much we are getting? How much you are getting? Are you getting 1500 and 500? Are you getting this amount? 1500 and 500? Tell me. So here we will write creditors का 1500 and bank loan we paid 500. Now how much is cash available? Now how much cash is available with us? पूरा पे कर दिया. Nil cash is available. Now how much is the total claims? minus करो. 145,000 में से 6 minus करो 6,000. How much you are getting? 1,39,000. 1,45,000 minus 4,000 minus 2,000. We are getting 1,39,000. 4,000 1500 देखो रेशियो से मिला. 2000 into 3/4 1500. 2000 into 1/4 500. We have divided 2000. हम एक सिर्फ क्रेडिटर को 2000 नहीं दे सकते, या तो सिर्फ बैंक लोन को 2000 नहीं दे सकते. We have to pay both in the ratio. So ratio is 3:1. When we divide 2000 in the ratio 3:1, that is 3 plus 1, 3/4, 1/4, we get this amount. Now 4,000 minus 4,000, we will get nil. 15,000 में से 1500 माइनस किया, we get 13,500. and 5,000 में से 500 माइनस किया, we get 4,500. and here this amount we have not touched. ये सब अमाउंट्स को हमने टच नहीं किया, पे नहीं किया, तो इट विल रिमेन द सेम. नाउ कैश अवेलेबल इज नील. तो अब क्या करें? नाउ वी विल गो टू अवर फर्स्ट रियलाइजेशन. फर्स्ट जब हमने असेट्स को सेल किया तो जैन में हमें मिला है 12,000. सो दैट इज अवर फर्स्ट रियलाइजेशन. सो यहाँ पे लिखेंगे 2014 जैन में वी हैव गॉट अवर फर्स्ट रियलाइजेशन. हाउ मच इज द अमाउंट? 12,000. हाउ मच वी हैव गॉट? वी हैव गॉट 12,000. सो ये 12,000 में क्या अभी हम क्रेडिटर और लोन को पूरा पे कर सकते? टेल मी. टोटल अमाउंट 13,500
and 4,500. How much is it coming to? It is coming to 18,000. बट हमारे पास सिर्फ 12,000 है, तो हम क्या करेंगे, जितना है उतना पे करेंगे. लेस पेड टू क्रेडिटर एंड लोन इन रेशो. रेशो क्या है? 3:1. सो ये 3:1 में हम 12,000 जितना कैश है उतना पे करेंगे. सो अवर लाइबिलिटी ऑल्सो विल रेड्यूस. नाउ हम लोग को जाना पड़ेगा वर्किंग नोट में एंड 12,000 को डिवाइड करना पड़ेगा रेशो में. डिवाइड 12,000 इन 3:1. So how much it will come? 12,000 into 3 divided by 4. 12,000 into 1 divided by 4. 4 कैसे मिला? 3 plus 4 is 1. So here we are getting 9,000. Here we are getting 3,000. So हमें मिल गया. How much is the amount? So here हम लिखेंगे कितना पे किया? 9,000. Here कितना पे किया? 3,000. So इसके बाद अगेन हमारा रियलाइजेशन का पूरा पैसा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. नाउ हाउ मच कैश इज अवेलेबल? कैश अवेलेबल इज नील. सो नाउ टेल मी, 1,39,000 में हमने 12,000 पे कर दिया. so अभी कितना पे करना बाकी है? 1,39,000 minus 12,000, 1,27,000 is pending. So 13,500 में से 9,000 पे कर दिया, तो कितना बाकी है? 4,500. यहाँ पे how much is remaining? 1,500. But here partners capital, this partners loan and partners capital, ये अभी तक we have not touched, we have not paid these people, so it will remain the same as it is. So our cash available is nil. Now we have to again go to the question and check what is the second realization. Let us check what is the second realization. It is in the month of February, 15,000. February में 15,000. So we will write here February. Our second realization, it is how much? 15,000. Now tell me, 15,000 में क्या हम 4,500 and 1,500 fully creditor and loan को पे कर सकते हैं? From 15,000, out of 15,000, can we pay 6,000 at once? Because now creditors and bills payable, how much amount is remaining to be paid? 4,500 and 1,500. Add both of them, you get 6,000. So can we pay both of them at once? Yes, we can pay, na? So less paid to creditor and loan. कितना पे करेंगे? 6,000. Here also our liability also 6,000 will get reduced. So यहाँ पे पूरा amount we can pay at once. So now how much cash is available? Now how much cash is available? Tell me. How much cash is available? 9,000. ये 9,000 में से अभी कौन सा लाइबिलिटी पे करना है? आफ्टर पेइंग ऑल द आउटसाइड लाइबिलिटी, बिकॉज इनकम टैक्स इज प्रेफरेंशियल creditor, we paid them. Then creditor and bank loan we paid fully, we have paid. Now we will go to the internal liability, and internal liability में सब कैपिटल को लास्ट में पे करना है. कैपिटल को पे करने से पहले we will have to pay loan from S which is 11,000. Tell me, पूरा 11,000 एक ही बार में पे कर सकते हैं? Can we pay full 11,000 full? No, but we have only 9,000. So pay to S loan. हम क्या करेंगे? S loan पे करेंगे, but we have only 9,000. तो जितना है उतना दे दो, 9,000 पे कर दो. So we will pay 9,000. Now how much is cash available?
Now how much cash available is there? Nil. करेक्ट. नाउ 127 में से कितना पैसा, कितना लाइबिलिटी पेड हो गया? टेल मी हाउ मच लाइबिलिटी इज पेड. How much liability is paid? 6,000, 9,000, 15,000 is paid. Now how much liability is outstanding? 1,12,000. 15,000 is paid from 1,27,000 and now outstanding is 1,12,000. This is fully paid. This is fully paid. 11,000 में से 9,000 पे कर दिया तो still 2,000 has to be is payable. 40,000, 40,000 and 30,000. This fully is to be paid. We have not touched partners. We have not paid to partners yet. So now this is nil. Cash available is nil. We will go to the next realization. We will go to the next realization. How much is next realization? March, May, it is 10,000. So we will write March. We will directly go to March. When we are getting our money, March, how much? March is the third realization, na? Third realization, which is equal to 10,000. Now ये 10,000 में सबसे पहले किसको पे करना है? What is still pending to be paid? पार्टनर्स लोन, वो इसका लोन पे करना बाकी है बिकॉज इसका लोन 11,000 था. वी हैव ओनली पेड 9,000. स्टिल 2,000 हैज टू बी पेड. सो वी विल लेस पे टू एस लोन. एस लोन हाउ मच इज पेंडिंग? 2,000 is pending. So our liability also 2,000 will reduce and S loan is completely paid. Now how much is the cash available? Cash कितना available है? It is 8,000. Now we have paid all the we have paid preferential creditors, outside liability, partners loan. Now finally what is left out? We have to pay the capital. Finally what is left out? We have to pay the capital, and to pay the capital we have to refer the order of payment. मतलब जो भी पार्टनर ने excess capital दिया है that partner will be paid first. So सबसे पहले as per the order of payment we will have to pay S rupees 10,000. We will have to pay S rupees 10,000. But हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है? We are having only 8,000. So pay to S. कितना पे करेंगे? We will pay 8,000. So our liability will be reduced by 8,000. So S किधर है? S यहाँ पे है 8,000. Correct? S is in the center. S capital is in the center. So S को पे कर दिया 8,000. So अभी what is the cash available? Cash available again became nil. Cash available is again nil. So now again we will have to check for the realization. How much? When now after March, first, second, third, now our fourth realization in April, 30,000. Now our fourth realization is in April. So we will go to April. Our fourth realization. How much amount? 30,000. Now tell me किसको पहले अभी किसको पे करे? जो इसका ऑर्डर ऑफ पेमेंट में फर्स्टली एस को 10,000 देना है. बट हैव वी पेड 10,000 टू एस फुल्ली? हमने 10,000 में सिर्फ 8,000 पे किया है. तो अभी भी कितना पे करना बाकी है? फर्स्ट पेड टू एस. हाउ मच इज पेएबल? 10,000 पे करना था, हमने सिर्फ 8,000 पे किया. तो स्टिल हाउ मच हैज टू बी पेड? स्टिल 2,000 हैज टू बी पेड. सो यहाँ पे इसके इधर वी विल राइट 2,000. करेक्ट. एक चीज, कैश अवेलेबल नील था तो हमने यहाँ पे टोटल नहीं किया ना. तो मुझे बताओ 10,000 गया तो इट इज 1,02,000. यहाँ पे कुछ ये तो ऑलरेडी नील है. This also became nil, correct?
और यहाँ पे 40,000 बिकॉज एल को कुछ भी नहीं पे किया, एस का बिकम्स 32,000 एंड हियर व्हाट इज द लास्ट पार्टनर बी, एल एस एंड बी, बी को भी कुछ भी पे नहीं किया तो पूरा 30,000 ऐसे का वैसा ही है। जब हमारा कैश अवेलेबल नील होता है तो हम सब कितना बाकी है पे करना सब टोटल निकाल लेते हैं। तो ये हो गया। तो नाउ टेल मी हाउ मच इज द कैश अवेलेबल, हाउ मच इज द कैश अवेलेबल, 30,000 में 2,000 एस को दे दिया, सो नाउ हाउ मच इज रिमेनिंग, 28,000. How much is cash available? Cash available is 28,000. Now let us see whom we will pay. After paying S rupees 10,000, now we will pay to S and B rupees 20,000. Now we will pay to S and B rupees 20,000. कैसे पे करना है, एस को 10,000 बी को 10,000, तो 1:1 इक्वली 10,000 देना है, तो 10 and 10 टोटल 20,000 देना है एस एंड बी को। बट वी आर हैविंग हाउ मच कैश अवेलेबल, वी आर हैविंग 28,000, सो 28,000 में से कैन वी पे टू एस एंड बी, पे टू एस एंड बी, कैन वी पे फुल अमाउंट? सो 28 में से आराम से वी कैन गिव 20,000। सो कितना देना है एस को, एस को देना है 10,000, बी को ऑल्सो वी विल हैव टू पे 10,000। नाउ हाउ मच इज द कैश अवेलेबल, नाउ हाउ मच इज द कैश अवेलेबल, टेल मी। कैश अवेलेबल नाउ इज 28 में से 20 गया तो 8,000 इज अवेलेबल। नाउ whom to pay, go to the order of payment again, सेकेंड पॉइंट भी कंप्लीटली पे हो गया। जैसे इसके बाद भी अगर पैसा बचता है देन पे टू ऑल इन द रेशो, व्हाट इज द रेशो, 2:1:1, व्हाट इज द रेशो, 2:1:1, करेक्ट ना, हमने यहाँ पे फाइंड किया ना 2:1:1, अगर तीनों को पे करना है तो ये रेशो में पे करो। सो नाउ व्हाट वी विल डू, लेस पेड टू ऑल, लेस पेड टू ऑल, तो कैसे, ये 8,000 पूरा पे करेंगे, ये 8,000 बट कैसे डिवाइड करें, उसके लिए लेट अस गो टू अवर वर्किंग नोट, let us go to our working note, we have to divide 8,000 in ratio 2:1:1, so divide करो 8,000 into 2 divide by 4, 8,000 into 1 divide by 4, 8,000 into 1 divide by 4, how much are you getting? We are getting 4,000, here we are getting 2,000, here we are getting 2,000. So we got the amount. Let us write here, let us write here how much we will pay, 4,000, we will pay 2,000 and we will pay 2,000. Now how much is the cash available? Now how much is the cash available? It is nil. Cash available is nil. How much is our liability? How much is the total claims? Total claims कितना है? Total claims कितना है? 1 minute, यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं ना total claims 2,000 लेस पेड टू एस, यहाँ पे हमारा लाइबिलिटी भी 2,000 कम हुआ तो यहाँ पे हमें मिलता है 72,000। सो पे टू एस 2,000, हियर ऑल्सो हमारा लाइबिलिटी भी उतना कम हुआ और हमने एस को दिया था तो हमारे पास 72,000 बचा। इधर कितना बचता है, 40,000 माइनस 4,000, हाउ मच, 36,000। इधर कितना बचता है, इधर कितना बचता है बताओ, हाउ मच यू आर गेटिंग, 32,000 माइनस 2,000,
minus 10,000 minus 2,000, we are getting 18,000. Here also we are getting 18,000. Now iske baad again is there our final realization. हमारा final realization अभी भी है. Let us go and see our final realization. May में 35,000. So let us go and let us do for our final realization. May में final पैसा मिला, इसके बाद एक भी पैसा नहीं मिलेगा. Final realization 35,000. This again we will use टू, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला ऑर्डर ऑफ पेमेंट में कि अब इसके बाद जितने भी बार पैसा आएगा वी विल हैव टू पे टू ऑल द पार्टनर्स. सो अभी फाइनली हमें अभी जितने भी बार, ये तो फाइनल रियलाइजेशन है, जितने भी बार पैसा आएगा दैट वी विल गो विद, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स, पे टू ऑल. सो ये 35,000 पूरा पे कर दिया तो हमारा लाइबिलिटी भी उतना कम होगा. अब 35,000 को डिवाइड करो, डिवाइड 35,000 हियर, डिवाइड 35,000 इन 2:1:1, ये रेशो में डिवाइड करो. सो 35,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 4, 35,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, 35,000 into 1 divided by 4. How much are you getting? 35,000, 2 divided by 4, we are getting 17,500. How much here we are getting for 1 divided by 4? 35,000, 35,000 into 1 divided by 4, we are getting 8750. यहाँ पे also we are getting 8750. So come, let us write here 17,500, 8750 and 8750. इसके बाद कोई भी रियलाइजेशन नहीं है, हमारा कैश अवेलेबल नील हो गया. अभी आगे जा, दिस वाज द फाइनल रियलाइजेशन, इसके बाद अभी कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला. पर लाइबिलिटी अभी भी कितना पे करना बाकी है? 72,000 minus 35,000, still 37,000 has to be recovered. अभी हमारा लाइबिलिटी और भी बाकी है. हमारा फाइनल रियलाइजेशन 35,000 का है, बट स्टिल हमें 37,000 मिलना बाकी है. बट ये अभी बिकॉज सारे असेट सेल हो गए और हमें सारे पैसे मिल गए, अभी ये 37,000 कभी भी रिकवर नहीं होगा. सो दिस फाइनल अमाउंट इज नोन एज रियलाइजेशन लॉस. दिस इज नोन एज रियलाइजेशन लॉस. तो फाइनली एवरी पार्टनर का कितना है देखो, 36,000 minus 17,500, we are getting 18,500. Same way, 18,000 minus 8750, 9250, 18,000 minus 8750, 9250. तो फाइनली ये जो हमें मिला है, दिस इज नोन एज रियलाइजेशन लॉस. दिस इज नोन एज रियलाइजेशन लॉस. अगर हम ये 72,000 पूरा रिकवर हो जाता तो हम बोल देते उसके बाद एक भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिला, तो दैट वुड बी नो प्रॉफिट नो लॉस. बट ये 72,000 को पे करने के बाद भी थोड़ा और पैसा असेट को बेच के मिला होता तो वो रियलाइजेशन प्रॉफिट होता है. इसके हम सम्स करेंगे तो तुमको समझेगा हाउ do we get realization profit. That question, that type of question is already there. Realization profit ka question is already there in my YouTube channel. And with this sum is done. And thank you very much everyone. With this I end today's lecture.